Somebody please check your microphones. Okay. Automatic identification system. Okay, why we are seeing this kind of picture in this? This yellow thing, what is that? This is AIS data transmitted by other ships. Nitish Kumar. Nitish is not responding. Nitish, where are you? Okay. Live caption कहाँ से start होता है? Okay. Nitish, are you there? Okay, let me mute everyone. Now sharing the slide once again. All right. So objectives, once we have done the complete topic, then we'll be, knowing about certain aspects of the device, which is there displayed on your screen. Purpose, we have already discussed. We'll talk about frequencies and coverage area. Ship to ship data exchange के बारे में बात करेंगे. What are the components of AIS that we'll see? And will be some more also. Lot many things that we are going to discuss. So here is something that is being seen. This is, just for your information, just for making it interesting. This is an AIS data transmitted by a hijacked ship. Again, like it is looking, Somalia is the culprit here, popularly known worldwide, Somalian areas. So why do you think that? Don't you want to ask the question ki how it is that aerially it is being observed here? Normally आपको पता है, वैसे आगे भी फॉर्मली भी हम लोग बात करेंगे कि एएस वीएचएफ पे काम करता है तो रेंज तो उतनी होती नहीं. तो how is this being shown on the screen like this? Or when through the internet you are asking for your ship कि मुझको ज्वाइन करना है, अभी कहाँ है शिप, तो आपको इंटरनेट पे भी पता चल जाता है. AIS is a short range communication, works within 30-40 miles range of the ship, but that is happening when you are located on the surface of the earth. If the ship is here and she is transmitting, she can only transmit up to this, which is 30 to 40 miles. So line of sight communication. Yes, line of sight. So this is line of sight, and as it is going, somebody will not receive. What about a satellite which is in the sky like this? Is it line of sight or not?
Is it? Yes, sir. So the AIS signal can be picked up by AIS satellites also, and these satellites download the data, and depending on so many things, other things, उतने complication में नहीं जाएंगे, but they can put it onto the internet. आपका जहाज कहाँ पे है? You can find it out. There are some private agencies which also provide monitoring of the ship as she is moving using AIS data only. So you have to pay money for 1 year, and they will constantly monitor your vessel with the AIS data that is being transmitted. They have satellites up in the sky. The satellite is keeping watch on them, and they will send the data ashore to the parent company where is the ship right now. So please go through this slides, couple of slides about the introduction of the topic. I'm letting you read yourself because we did discuss about it. Next. कुछ कहा आपने? No, sir. Next slide. अच्छा, ओके, हाँ, आ गया. Just in time. So transmission of our data, reception of our data, others' data, also communication between shore-based facility. It is a transponder system. AIS is a transponder system. What is transponder? एक तो ये broadcast करता है. That means once data is transmitted, it is transmitted for anybody. किसी के पास receiver हो तो वो receive कर सकता है. Like we have FM broadcast, like FM radio 98.3 Mirchi and Radio City and Radio Fever and whatnot. These are all broadcast. So it is transmitted from the station. If we have a receiver, we can listen to it. Similarly, AIS is also a broadcast system, but a transponder system as well. What is that? That it is not only receiving data, it is transmitting as well, but it transmits also on query. If somebody is interrogating आपके जहाज के AIS को अगर एक कमांड मिली और पूछा गया उससे कि भाई अपना पोजीशन बताओ, तो उसके जवाब में अपना पोजीशन भेज देता है. अगर पूछा गया उससे भाई अपना नाम बताओ, तो अपना नाम भेज देगा. So it responds to a query, interrogation. Have we heard the word transponder any other place also? किसी और context में transponder सुना है आपने? SART हो गया सर. SART सर. Very good, SART. अब SART का फंक्शन थोड़ा सा बता लीजिए मुझको. क्या करता है वो जनरली? सर X-band radar पे ट्रांसमिट करता है. सर ट्रांसमिट करता है, अपने आप करता है. Sir, when it is interrogated by the radar, sir. Exactly. Exactly. That's 12 concentric rings. Very good. Very good. So that is what I was trying to drive at. कि जब आप स्विच ऑन करते हैं SART को तो ट्रांसमिट नहीं करता. जब कोई जहाज पास से पार होती है और एक्सबैंड का सिग्नल हिट करता है SART को, तब ये जवाब देता है. That means interrogated मतलब there is an incoming signal and in response to that it is transmitting back. So that is a transponder. AIS can also do that. AIS can receive information and in response to that it will also respond. It will transmit back the answer. So it is a broadcast system, transponder system,
which is working on the VHF band. VHF maritime band, ITU के लिए VHF band is 330 megahertz to 300 megahertz. That is the ITU nomenclature के हिसाब से VHF is 30 megahertz to 300 megahertz. But इसमें maritime band भी है. VHF अगर सिर्फ है तो हम सिर्फ maritime वाला ही तो नहीं यूज करेंगे, तो दूसरे सर्विसेज भी हैं वो भी यूज करेंगे. एविएशन को भी यूज करना है, पुलिस को भी करना है, वैसे बहुत सारे सर्विसेज हो सकते हैं. एम्बुलेंस को भी करना है, हेल्थ सर्विसेज को करना है. So one band is given for maritime use, which is 156 to 174 megahertz. That is the maritime VHF band. AIS is working in this band itself. The frequencies which are transmitted, frequencies which are used in this. एक सेकंड, अच्छा थोड़ा मैं आगे चला गया. चलो ये भी बात कर ही लेते हैं. What are the components of this transponder system, AIS transponder system? VHF पे ट्रांसमिट हो रहा है, इसलिए ट्रांसमीटर रिसीवर होना चाहिए. Then there is something new looking like TDMA receivers. वो भी दो, एक नहीं दो. So we'll talk about this TDMA receiver और TDMA functionality in detail. आगे बात करेंगे हम लोग. Then there is DSC receiver. How many people thinking DSC मतलब something to do with distress? How many people thinking that? DSC means distress, correct? It has to do something with distress, correct or not? Why nobody responding? अलर्ट आएंगे, डिस्ट्रेस भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है. कोई और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे DSC is basically digital selective calling. In a way, your mobile is also DSC. आप एक नंबर डायल करते हैं, एक सेलेक्टेड पार्टी को कॉल कर पाते हैं. आपकी कॉल सीधी जाती है सेलेक्टेड पार्टी को, उसके पास घंटी बजती है, वो जवाब देता है. सो डिजिटली यू आर एबल टू कॉल पर्सन सेलेक्टिवली. आपका ट्रांसमिशन सिग्नल तो पूरे आपने आपके मोबाइल से निकला तो सब एरिया में जा रहा है, सब तरफ जा रहा है, लेकिन कॉल जो जा रही है वो एक सेलेक्टेड पार्टी को जा रही है. एंड दैट इज व्हाट वी डू इन रेडियो कम्युनिकेशन आल्सो. DSC में भी आप MMSI डालते हैं, विच इज लाइक मोबाइल नंबर, एंड व्हेन यू सेंड द अलर्ट तो वहां पे घंटी बजती है उसकी, वो जवाब देता है, फिर रेडियो पे आके बात करता है आपसे. सो दिस DSC is basically about able to call a station selectively or group of stations or all stations as the case may be. So channel management के लिए होता है normally. There is one DSC receiver module also. VHF है तो एंटेना भी होगा. हमने बात करी थी कि ट्रांसमिट करता है अपना पोजीशन, कोर्स स्पीड वगैरह, तो GPS लाजमी है. तो GPS या तो एक्सटर्नल हो सकता है या इनबिल्ट हो सकता है, कि वो हमारा GPS अलग लगा है, उससे डेटा उठा के हमने AIS में डाल दिया, तो एक्सटर्नल GPS हो गया. Otherwise, it can also have internal GPS. If there is internal GPS, there has to be a GPS antenna also, because the design of the GPS antenna is supposed to be more specific for better performance, better reception. Having done this, we have a MKD. AIS is comprising of an MKD also. What is MKD? Minimal keypad and display. It is that डब्बा which you see. AIS के नाम पे जो डब्बा होता है आपके जहाज में, that is MKD. छोटा सा तो स्क्रीन होता है, 2-4 तो की होते हैं, उसमें बटन्स होते हैं. तो मिनिमम की
and minimum display. एक बार देखते हैं तो ज्यादा MMSI कोर्स स्पीड आ जाता है, पोजीशन कोर्स। और अगर डेटा देखना है तो स्क्रॉल कीजिए, राइट बटन दबाइए, लेफ्ट बटन दबाइए। एक बार में 4, 5, 6 एंट्रीज दिखती है स्क्रीन पे। और देखना है तो स्क्रॉल कीजिए अप एंड डाउन। तो छोटा सा स्क्रीन जिसमें मिनिमम डिस्प्ले है, थोड़े बहुत कीपैड, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे का एक बटन होएगा, ऑन ऑफ बटन होएगा, पावर का बटन होएगा, हो गई बात खत्म। सो कीपैड एंड डिस्प्ले। Now the AIS has to collect data from other devices because it has to transmit. It has to transmit your gyro course or heading. कहाँ से मिलेगा भाई इसको? तो gyro से मिलेगा। तो gyro का इनपुट भी AIS को देंगे, GPS का इनपुट भी देंगे, स्पीड लॉग का इनपुट भी देंगे। So there are multiple ports available for connecting other devices which are providing data. Sensor equipment के connections के लिए there are multiple ports available, जिसमें what we are calling this interface, communication interface. Interface is basically the common ground between common point between two separate things. जहां पे वो जुड़ रहा है, that is the interface. So components of AIS. The main purposes of AIS, you know already. Now coming direct to this. As we said, it is a VHF based system. ITU, International Telecommunication Union, has allocated 2 dedicated frequencies for use on AIS. ITU has given channel 16 for distress communication, call and reply. Similarly, ITU has also given dedicated frequency for AIS operations, not 1 but 2 frequencies. And they are named like this. The frequencies are named like AIS1 frequency and AIS2 frequency. You have the frequencies in front of you, 161.975 megahertz and 162.025 megahertz. These frequencies also have a channel number, 87B and 88B. The first channel, that is 87B or AIS1 frequency, is used normally for ship-to-ship communication. AIS2 for ship-to-shore communication. Range, as we know, normally 30-40 miles for VHF, line of sight. So here also line of sight communication, maximum 30-40 miles. In fact, little less only, because the power transmitted is little bit less. VHF जैसा 25 watt नहीं होता, only half of that. It is transmitted power, maximum transmitted power is 12.5 watt. It has got power mode, 2 power modes basically, high and low. High में it will transmit at 12.5 watt. In low mode, 1 watt. How it functions? This is about electronics, electronic method of communication using radio communication. How these things are talking to each other is something called STODMA, self-organizing time division multiple access, or SOTDMA. This SOTDMA, or simply TDMA right now, is nothing complicated. Once you know the concept कि क्या मतलब है.
I will try to explain this by an example. The last class, 15:45 to 16:45, I came for teaching. Why? मैं क्यों आ गया इस क्लास में? Why did I come here? Because there was a clear-cut indication, a program was floated that 3:45 class is PSA. Who you were expecting at this time? Which faculty will come and deliver his lecture? You knew that it is going to be PSA. Why? Because you knew about the future plan. So if I know what is my time of transmission, at that time I'm transmitting. But is there any faculty transmitting in the same class at the same time? No, they are not. Why? Because they also know it is PSA time. But fifth class में मैं नहीं आया, कोई और सर पढ़ा रहे थे. Why? Because program was known. तो आपके दिन के क्लास को मान लीजिए 9 o'clock to 5 o'clock और 1700 आवर्स के क्लॉक को, टाइम को हमने डिवाइड कर दिया छोटे छोटे क्लासेस में, एक एक घंटे की क्लास में, और ये क्लास दे दी पीएसए को, ये क्लास किसी को, ये क्लास किसी को, ये क्लास किसी को, और प्रोग्राम शेड्यूल सबको बता दिया एडवांस में. सो एवरीबडी इज कमिंग एंड गिविंग द लेक्चर इन देयर ओन टाइम. ये यहाँ पे देके चले जाते हैं, सब क्लास बेनिफिट. दूसरे टीचर आते हैं, वो यहाँ पे पढ़ा के चले जाते हैं, सबको बराबर बेनिफिट, कोई कंफ्यूजन नहीं. सो द टाइम इज सेम 9 to 5, but it has been split into small periods. Every teacher is coming into the class in his own period and there is no confusion. One is transmitting, the rest all are listening. So the same thing is happening in case of SOTDMA. There are many shapes. Let us say A, B, and C and D. These are many ships. But when one is transmitting, others are only receiving. When A is transmitting, B, C, D are only receiving. When B is transmitting, this is receiving, and this is also receiving. When C transmits, then all others are receiving only. So transmission is happening one at a time. अगर सब लोग एक साथ ट्रांसमिट करते तो फिर से कंफ्यूजन होती. एक कमरे में ढेर सारे लोग बात कर रहे होते, समझने में दिक्कत होती है, इंटरफेरेंस होता है. So the TDMA is basically this, that one will transmit, all other will receive. One at a time transmission. तो इसी क्लास में सब लोग सुन भी रहे हैं, सबकी बात भी हो रही है, सारे टॉपिक्स भी पढ़ाए जा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा. वही आप सोच लिए सुबह सुबह 9 बजे 6 टीचर आ गए क्लास में और सब अपने अपना बात बोलने लगे, आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा. So that is what is TDMA, time division multiple access. Time has been divided in small parts and everybody is transmitting during this times only. When one is transmitting, others are only receiving. So multiple people access the same time slots at different times and transmit their data. So that is TDMA. Sir,
जी How much is the time delay for transmitting the messages if it is being transmitted? what do you mean by time delay? Like you said that at a time only one ship can transmit. Like A is transmitting, so B will not be able to transmit because others are acting as a receiver. So suppose I want will be Okay, I understood your question, and it will be explained little deeper in more detail little while later. तो कितने देर में हमको ट्रांसमिट करनी है? जैसे आज तो क्लास हो गई मेरी, अगली क्लास मुझको कब मिलेगी? कल की क्लास होगी या नहीं, परसों मिलेगी, 4 दिन बाद मिलेगी? Here I can decide कि when I want to transmit next. आगे आएगा when we are going to talk about this TDMA little bit in more detail. So we'll talk about it. Everything we'll discuss. So simply how it is working, again GPS वगैरह लगाते हैं, दूसरे devices होते हैं, all devices are providing data to the AIS and data is transmitted by the AIS. AIS का अपना कुछ नहीं होता. It is a device which transmits and receives automatically without human intervention. What will be transmitted has to be provided to the AIS. The GPS provides position, the gyro provides course, the log, speed log provides speed, the master will provide the name of the ship, the MMSI, the length of the ship, the type of the ship, etc., etc. So all the data which is to be transmitted has to be provided to the AIS. And for that we of course have interfaces available. AIS डब्बे में बहुत सारे connections हैं, तो हम अलग अलग इक्विपमेंट से उठा करके और रिकॉर्ड करते हैं, सॉरी ट्रांसमिट करते हैं डेटा. इसमें एक आउटपुट भी होती है, AIS की डेटा का आउटपुट भी होता है. वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड इज ऑल्सो सेंट आउट टू द VDR, वॉइस डेटा रिकॉर्डर, बिकॉज वॉइस डेटा रिकॉर्डर will record the information which is available in the AIS. So first of all, we'll take a look at what kind of data is transmitted. In general, we have discussed that the navigational parameters are transmitted. Also, the identification is transmitted, but these are categorized separately. The types of data transmitted by AIS. When we are talking about SOTDMA, so this will become more clear. As I said, SOTDMA के बारे में कि I decide my own transmission time कि अगली बार मैं कब transmit करूंगा. Every ship is able to do this. Every ship is able to decide when they want to transmit. And so the whole system of AIS is working all by itself continuously. किसी के बाहर के इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है कि भाई तुम ट्रांसमिट करो, अब तुम चुप हो जाओ, अब तुम ट्रांसमिट करो. नो एक्सटर्नल कंट्रोल, and that is why the name autonomous. No external control. So this is normal operating mode of the AIS. Modes of operation भी हम अलग से बात करें. दो frequencies use करने से थोड़ा benefit रहता है. We reduce the chances of failure of the AIS. एक से हो सकता था काम, but दो it is making it much more robust, much more fail safe. This is SOTDMA के बारे में ही जो अभी हमने कहा था कि I decide when I want to transmit next. So that is SOTDMA. How I decide when I want to transmit? It depends on me and it depends on the surroundings. Knowing कि दूसरे क्या कर रहे हैं उसके बेसिस पे भी थोड़ा मुझको असर पड़ता है, और मैं क्या कर रहा हूं उसके ऊपर भी असर पड़ता है. So when I will transmit next takes into account various conditions. What am I doing right now? Am I going straight or turning?
going slow, going fast, at anchor, at different conditions, different requirement for transmission of data that can be decided automatically. So this is what SOTDMA is. But before we go here, we would like to go to the data transmitted. So I will not, okay, here. Once we complete this, then we'll go to the SOTDMA a little bit more in detail. So the navigational parameter, the identification is split into 3 categories basically. And these categories are static data, dynamic data, voice related data, and additionally there is a feature provided for SMS, AIS, radio communication. We have SMS feature also, like we have it in mobile. We have SMS feature in the AIS also. What do? We type a short message, we transmit. Only this one is SSM, not SMS, but SSM, short safety message. And the name is derived from the purpose of it. This texting feature is given for transmitting safety related message. This may not be used to call a ship and say कि आज क्या बना है तुम्हारे जहाज में, बिरयानी बना है कि नहीं. It should relate. This feature should be used for only safety related purposes. As the name indicates, static data, static means not changing. So what information about the ship is not changing, never change? It is the identification, the name of the ship, call sign of the ship, MMSI, IMO number, type of ship, whether tanker, cargo, passenger, whatever type of vessel, length of the ship, breadth of the ship. So these are static data. Additionally, there is one more information to indicate where the antenna is fixed. The ship's position is basically the position of the antenna, because the GPS is working with this. अगर जहाज पे ये है तो antenna है. All calculations are done from this antenna itself. So जहाज अगर यहाँ पे है तो जहाज का पोजीशन ये है. अगर जहाज में एंटेना यहाँ पे लगा हुआ है तो जहाज का पोजीशन क्या हुआ, अच्छा डिलीट कर दिया. अगर ship is here and the antenna is here, the ship position is here. So where it is located, the antenna is also part of the static data. This is important because this has to be considered when comparing the relativity of the two positions. Let us think that there is a ship here which is 300 meters and the antenna is fixed at this place, some let us say 30 meters from here, stern. There is another ship which is like this. Also there is antenna which is placed here, again 30 meters. This is also 300 meters. So position wise, what is the distance between the two antenna? I mean the two ships. 270 this side, 270 that side. That means 490, 500 kitna? 540 meters. 5 foot. That means the two ships are separated by more than half a kilometer, still they are colliding. So this is an important information. Where is the antenna located for the ship? That will give how much of margin we should have forward, how much of margin we should have aft, in order not to collide with each other, other ships.
and this data is transmitted at every 6 minutes. Constant period hai, duration hai. Every 6 minutes it is transmitted so that other ships which may come into my area are able to receive my data. And if they have come into my area, I also must receive their data. So they are also transmitting at every 6 minutes. So static data is transmitted every 6 minutes. So we will talk about the dynamic data, voice related data, and the short safety message, little bit more detail about that to the last, when we are coming to the last of the topic, then we'll be talking about that. So how it operates? Okay, by the way, did we do the types of data transmitted? Yes, sir, we were discussing about the static and all. Okay, so the 4 categories of data: static data, dynamic data, voice related data, and another feature called short safety message, a free text message service which I can use. It is same as the SMS that we have in mobile. Mobile पे बात करने के लिए होता है, but you also have a feature you can send text message. Similarly, AIS is for automatic transmission of data and reception of data, but there is another feature provided for sending text message. But of course, this text message has to be related to safety. Iceberg sighted, floating object sighted, boy missing. So it can be used either by the shore stations or can be used by the ship stations, depending on the situation. So I guess that we have completed the types of data. All this data, the 4 types that we said, 3 of them are automatic. 3 of them are automatic. We'll go to the board for discussing this. We'll take a look what is the data contained. वैसे आपको पता है generally, but we'll see what is the data contained, what information is contained in the 3 types of data: static, dynamic, and voice related. एक बार देख लेते हैं फिर से. So let me go to the board. वहां पे बात करते हैं. All right, is the board visible? Yeah, ये मैंने क्या किया है? Okay, I have used Yes, sir. permanent marker to design something that I was doing. Okay, wait a second, please. सर इसके ऊपर व्हाइट बोर्ड मार्कर चला दीजिए. अभी देखो ना, मेरे पास बहुत जुगाड़ है. ओके, नहीं हो रहा. व्हाइट बोर्ड मार्कर ऊपर कर दीजिए, सेम ऐसे चला जाएगा. रुको ना, अलग अलग चीज मुझको यूज करने दो. पहले तारपीन का तेल यूज किया था, नहीं हुआ. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल करता हूं तो ले दे के हो जा रहा है. वो जो सर्जिकल अल्कोहल होता है, इट इज दैट. सारे मार्कर यहीं पे हैं, तो गलती से उठा के मैंने कुछ कर दिया. All right. So we're talking about the types of data. The static data, which is comprising of name, call sign, IMO number, जहां पे मिलेगा, MMSI, type of shape, length of shape, breadth of the shape,
These are the static data, does not change with the time at any time till the ship is with the same registry, same ownership, then it remains same. In addition to all this, there is another one which is location of GPS antenna. GPS antenna. I think हमने ये बात किया था ना? Yes, sir. Okay. Did we talk about also the? I'm sorry, I'm forgetting this. I forgot this. Did we talk about the transmission schedule कि कितने कितने देर में ये data transmit होती है? No, sir. नहीं. Okay. No, So sir, no, static sir. data. All right. Static data, dynamic data, which is changing constantly. That is position, date, time, COG, course over ground, speed over Heading. ground, heading, ROT, जहां पे applicable हो. ROT is required only for larger vessels of 50,000 GRT and above. These all data is collected from different devices, what we call the sensor equipment. If there is equipment A and this is the B is providing data to this, then this is called sensor equipment. If A is providing data to C, this is sensor equipment. For example, if we have radar here, radar में AIS के data आती है, तो AIS is the sensor equipment for radar. But the radar data is given to ECDIS, so radar is sensor to ECDIS. Also, ECDIS में gyro जाता है, gyro का data, so this is also sensor equipment. So all these are collected. All this dynamic data is collected from sensor equipment. You have ROTI, you have gyro, you have GPS for all this. Only one exception, which is not collected from other devices, is navigational status. This is manual. आपको डालना पड़ता है. Part of the dynamic data, but this has to be put manual. ये automatic आता है दूसरे devices से update होता रहता है. But this one navigational status has to be updated by the user. Then the voice related data. This is semi-static. Semi-static means it remains static only for a watch. What will be the information? Draft, destination, ETA, very good, ETA, number of persons, Number of crew. very good, number of persons, cargo or rather hazardous cargo type, and optional is waypoints. This is optional. You may put it, you may not put it, but I always am for this. We must put it. Waypoints should be given so that, especially in the coastal area, the VTS will know in advance what action we are going to take, where we are going to alter, क्योंकि उनके पास waypoints रहेगा. Accordingly, they will be able to guide us better, or other ships also better, that there is a ship coming, altering at this, and so and so. So these are the automatic. All this data is transmitted automatically. All this data is automatic. You don't have to do anything about transmission of this. This one is entered at the time of installation, static data. The technician comes on board. We provide him with the master provides him with the ship particular. On the basis of all that particular, he is doing this entry.
This need not be changed. You don't need to change this. Dynamic data, most part is interfaced with other equipment. So we don't need to worry about this. Only we have to see the navigational status, which we have to change as per our maneuvering condition. This is basically a drop list. Out of the list, you have to choose the status. It will be like moved, alongside, not under command, underway, वगैरह वगैरह, at anchor. So different kind of status you have been doing it, I suppose, manually to be done. This data is totally manually entered. Nothing in this is available from outside. Draft, present draft kitna hai? Now it is, the vessel is loaded, now in ballast condition. So draft change hoti rahegi, destination change hota rahega, ETA change hoega, number of persons, now maybe 28 people, now 24, तो supernumerary आ गए, चले गए, एक cadet ज़्यादा आ गया, तो it keeps on changing. Number of persons on board, hazardous cargo, if at all, the type of cargo should be mentioned, and the waypoints. When we are saying automatic transmission, how is it? How automatically transmitted? This one is transmitted every 6 minutes. और इसको मैं लाल में लिखता हूँ highlight करने के लिए. This is transmitted every 6 minutes. This also is transmitted every 6 minutes. This is given a time of 6 minutes for the new ships which are coming in my area. I am going in their service area or in their range. So exchange होती रहती है. 6 मिनट का time दिया हुआ है. It could be 5, it could be 7, but okay, 6 is given. We are talking about the fact what is happening. The dynamic data is depending on the speed and alteration of course. Speed and course alteration के basis पे it keeps on changing. Not that we have to do any kind of change. Remember, it is all automatic. So the ship may be moving very slow. Now she is moving very fast. Now she is at anchor. So at different conditions, the relevance of this dynamic data is changing. Just for example, common sense की बात है. Just to put across a point, if you are at anchor, are you posing any threat to somebody? Or are you posing a serious threat to somebody? जो करना है सामने वाले को करना है, मैं तो डाल के बैठा हुआ हूं, तो एक बार बता दिया कि भाई यहाँ पे एंकर पे हूं, तो आगे वाले का काम है. Do we need to transmit it quickly? बार बार खटाखट करते रहें? No, sir. Suppose we are moving at 20 knots. Are we going to be a threat to somebody? कोई सामने बैठा होगा, तो I should be updating my data faster. Yes, sir. अगर मैं 18 नॉट पे चल रहा हूं और साथ में कोर्स भी ऑल्टरेशन कर रहा हूं, अगर सीधी मैं चलता तो एक सीपीए बनी हुई थी, अगर ऑल्टरेशन कर दिया तो सीपीए में एंटी सीपीए में चेंज. So that is added kind of situation. So at different speeds, different maneuvering conditions, the dynamic data is automatically set by the AIS. How? So that we are going to see here. So we will take this as a table, dynamic data. Transmission schedule. So we have various conditions at anchor, second condition at anchor, but the vessel is swinging or moving at speed more than 3 knots. Then 0 to 14 knots, steady course, no change. 0 to 14 knots plus altering course.
Other category is 14 to 23 knots steady course. 14 to 23 knots plus altering course. Then more than 23 knots, if at all, and steady course, and more than 23 knots plus altering. So these are various kind of maneuvering conditions जिनके लिए ये defined है. What is the rate of transmission? So at anchor, it is 3 minutes. Every 3 minutes, the data is transmitted. Dynamic data we are talking about. At anchor, but swinging at more than 3 knots, then this becomes 10 seconds. 0 to 14 knots, it is transmitted every 10 seconds. When the ship is doing anything, any speed between 10 to 14, plus also altering course, this becomes 3.33 seconds. 14 to 23 knots steady course is every 6 seconds. And in these three conditions, when the ship is moving at 14 to 23 knots and altering, or more than 23 knots doing whatever, in this all these three cases, it is 2 seconds. So the AIS will automatically sense its speed and alteration of course. अगर हेडिंग चेंज हो रही है तो वो समझ रहा है कि मैं अल्टर कर रहा हूं. अगर नहीं चेंज हो रही तो स्टेडी कोर्स है. Speed is also obtained, so reference is taken from there. Automatically seeing the kind of situation the ship is in, it will transmit at this rate. So this is a popular question with AIS. What is the transmission schedule of the AIS data? Remember that we have to talk about all the 4 of the data. Static data 6 minutes, voyage data 6 minutes, dynamic data as per the speed and alteration of course. The 4th one is manual as and when required. Are we good here? Yes, sir. Any Yes. questions? Any questions here? इंटरनेट पे या दूसरे रेफरेंस बुक्स में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अलग टाइमिंग्स मिले आपको, कुछ 12 सेकंड, कुछ ऐसा मिले. प्लीज डू नॉट गो फॉर दैट. दिस हैज बीन पिक्ड अप फ्रॉम IMO परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स latest amendment which came in 2014 or something. As per that, पहले वाले में थोड़ा टाइम अलग था. जो लेटेस्ट जो लास्ट आई है उसके हिसाब से दिस इज व्हाट द ट्रांसमिशन शेड्यूल इज. जनरली आई हैव सीन पीपल मेकिंग दिस मिस्टेक, पिकिंग अप सम अदर डॉक्यूमेंट और उसके बेसिस पे वो लिख देते हैं. बट रिमेंबर दिस इज द आंसर एंड करेक्ट वन. Just now we have seen that there are so many ships and transmitting so fast, every 2 seconds, or maybe 10 seconds and 3 seconds and 6 seconds and like that. If we are in a place like Singapore, where there are so many ships, hundreds of ships, all transmitting data, is it going to cause interference or not? एक ही साथ सब लोग बोलेंगे तो डेफिनेटली मैं सुन नहीं पाऊंगा कि मैं किसकी बात सुनूं, किसकी नहीं सुनूं. आई एम रिसीविंग ऑन वन फ्रीक्वेंसी, everybody transmitting on that same frequency. I am not able to listen. So what could be the smart way that I am able to understand each one? कि अच्छा इसकी बात ये है, उसकी बात ये है, उसकी बात ये. What could be common sense? Again, common sense. What could be the method or process that we should follow in order to understand each other in a clear manner? क्या कर सकते हैं? Possible solutions.
सब लोग बारी बारी बोलें तो Every equipment should transmit at a dedicated channel. सर टाइम स्लॉट दे दिया जाएगा। ओके, दो आंसर आई हैं, मुझको यहाँ पे दो आंसर आई है। एक तो अलग अलग चैनल पे ट्रांसमिट कर, दूसरी आई है कि अलग अलग टाइम पे ट्रांसमिट कर। So these are the two possible solutions as we have seen कि भाई अगर एक ही कमरे में बैठे हैं, क्लास चल रही है, सबकी बात सुननी है, तो एक बार में एक आदमी बोले, जब टीचर बोले तो बाकी सब चुप, जब आकाश बोले तो बाकी सारे चुप, टीचर को मिला के जब मोहित बोले, जब वो बोले, एक एक बार सब लोग ट्रांसमिट करें, बाकी सारे रिसीव करें। वन मेथड ऑफ ऑपरेशन इज गुड। अदर मेथड इज दैट सब लोग अलग अलग क्लासरूम में जाओ, तुम वहां बात करो, तुम वहां बात करो, तुम वहां बात करो, सब साथ में बात करो, लेकिन अलग अलग जगह, डिफरेंट क्लासरूम्स, दैट इज डिफरेंट चैनल्स। जैसे एक ही साथ ट्रांसमिशन हो रही है, बट 98.3 पे भी हो रही है, वहां कुछ बज रहा है, 91 FM पे कुछ बज रहा है, 102.6 पे कुछ हो रहा है, 106.2 पे कुछ और हो रहा है, सब साथ में कर रहे हैं। मैं जिसकी बात सुनना चाहता हूँ उस चैनल पे जाता हूँ, आई एम लिसनिंग, नो प्रॉब्लम, बाकी तुम ट्रांसमिट करते रहो जो करना है, channels are different. So the second option, in electronic communication there is a third possibility also. एक ही कमरे में है, एक ही साथ बोल भी रहे हैं, but I am tuned to a particular code. मेरा मोबाइल कब बजता है? जब कोई मुझको कॉल करता है, मेरे अपने कोड पे कॉल करता है, मेरा मोबाइल नंबर सो टू से फॉर एग्जाम्पल, बट ये तो सिर्फ कॉलिंग की बात हुई, लेकिन जब मैं बोलने लगता हूं तो सब तो इंफॉर्मेशन वही है, ऑडियो। सो दिस ऑडियो इज कन्वर्टेड, कुड बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ कोड। एक ही टाइम में ट्रांसमिट हो रहा है, एक ही फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट हो रहा है, बट कोड्स आर डिफरेंट। तो उसके लिए वो कोड, उसके लिए वो कोड, अपनी कोड से मैं बात करता हूं, आप दूसरी कोड से आप बात करते हैं, तो किसी को इंटरफेरेंस नहीं। तो दिस इज थर्ड पॉसिबिलिटी कि कोड्स आर डिफरेंट। बहुत पहले आया था, शुरुआत में जब रिलायंस का फोन आया था, छोटे वाला। मोहित आपका माइक्रोफोन ऑन है, probably you don't remember. हाँ, थैंक यू। रिलायंस का फोन आया था शुरुआत में, छोटे वाला सिल्वर कलर का। What kind of phones we used to call it? CDMA. CDMA. That was different kind of codes being used for communication on the same frequency, same time, but the code was different, and it was code division multiple access. AIS uses TDMA. एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही तरीके का इंफॉर्मेशन, बट अलग अलग टाइम। भाई एक बार तुम करो, फिर तुम करो, फिर तुम करो, फिर तुम करो, सेम तरह का कोड, सेम तरीके का इंफॉर्मेशन, सेम फ्रीक्वेंसी, बट टाइम्स आर डिफरेंट। एक बार में एक। On the other hand, satellite communication. There are so many ships at sea. Everybody is trying to call home. So how is that getting managed? Satellite communication में कुछ NCS होता है, नेटवर्क कोऑर्डिनेशन स्टेशन, हर ओशन रीजन में अलग अलग होता है। उनका काम है वो चैनल एलोकेट करते हैं। जैसे एक शिप का कॉल जाता है, जो फ्री चैनल होते हैं दे देते हैं, भाई तुम यहाँ बात करो। दूसरा कॉल करता है, तुम यहाँ बात करो। सबको अलग अलग चैनल दे देते। किसी और ने कॉल किया, तब तक दूसरे का खत्म हो गया, अच्छा तुम ये वाला ले लो, अब वो खाली हो गया। सो सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, सेम टाइम, बट डिफरेंट चैनल्स। FDMA, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDMA,
TDMA, FDMA. Different kind of services used in different kind of scenarios. So what we are going to use here, TDMA, time division multiple access. So how is it enacted in case of the AIS? In our class, आज 20 तारीख है, 30 तारीख के एक दिन के क्लास को one day of today, 20th April, has been divided into, let us say, 8 classes. I am taking this third class. मैं पहले क्यों नहीं आया, बाद में क्यों नहीं आया? क्योंकि पहले से शेड्यूल तय था. इसके पहले वाली क्लास किसी और की थी, पहले से शेड्यूल तय था. आगे की क्लासेस कौन लेंगे? सब पहले से शेड्यूल तय है. Everybody knows, including you, who is going to come in this class, this class, this class, this class, this class, this class. That means if we have an advanced program circulated amongst all the participants, everybody is at peace कि भाई किसका कौन सा टाइम है वहां पे बोलेगा. And the same process is used in TDMA AIS. तो यहां तो एक दिन का 8 क्लास था, यहां पे 1 minute, which is 60 seconds of course, इतने देर का टाइम is divided in very, very small parts. How many parts? 2250 parts, which is called slot, time slots. AIS is a digital communication. जो हम टेक्स्ट देख रहे हैं, that is converted into digital information, transmitted, received and converted back into text, जो हमारे स्क्रीन पे दिखता है. तो डिजिटल कम्युनिकेशन जहां पे बात करेंगे वहां बिट्स पर सेकंड बात हो जाएगी. सो दिस ट्रांसमिशन रेट ऑफ AIS is 9600 बिट्स पर सेकंड. एक सेकंड में 9600 बिट्स ट्रांसमिट होते हैं AIS में. इस एक मिनट में there are so many time slots. A ship A will try to transmit in one slot. When the ship A is transmitting using one slot, then ship B and ship C is going to receive this information. जो इन्होंने ट्रांसमिट किया इस टाइम पे ये इन दोनों को मिल गया. यहाँ पे एक चीज हमें समझने की जरूरत है थोड़ा सा जानकारी के लिए कि वन टाइम स्लॉट कितने देर का है. वो वन टाइम स्लॉट is how much time, and in that time how many bits will be transmitted. So can somebody tell me these two answers? One slot is how much time and how many bits could be transmitted. Now that you know the rates, 60 divided by 2250. very good, 60 divided by 2250. So how much is that? Okay, 60 divided by 2 is 0.026666 seconds, correct? Which can be converted into 256. milliseconds, which can be converted into 67 milliseconds. 26.67 milliseconds, that is the time. Now, how many bits can be transmitted in this much of time? $256. Very good. Bingo. So 256 bits. 256 familiar sound हो रहा है ना, हर जगह हम सुनते हैं. 512, 256, 1024.
डिजिटल कम्युनिकेशन में हम सुनते रहते हैं ये। So Yes. our ship A is trying to transmit in 256 bits. It is trying to transmit its data, which takes 26.67 milliseconds. But as it is transmitting this data, let us say dynamic data was transmitted, it also transmits the slot reservation कि मैं अगली बार यहां ट्रांसमिट करूंगा। सो बी और सी को ये भी इंफॉर्मेशन मिल गया कि अच्छा ये ए के लिए बुक्ड है, आगे बाद में यहां पे ट्रांसमिट करेगा ये। बी इज ट्रांसमिटिंग हेयर एंड इट ऑल्सो रिजर्व द स्लॉट फॉर नेक्स्ट ट्रांसमिशन कि बी विल बी ट्रांसमिटिंग हेयर। सो ए को पता चल गया कि ये बी का स्लॉट है, सी को पता चल गया ये बी का स्लॉट है, यहां वाली बी और सी को पता चल गया कि ए इज गोइंग टू ट्रांसमिट एट दिस स्लॉट। द सी विल ट्रांसमिट समवेयर हेयर एंड इट इज बिकॉज इट इज हाई स्पीड प्रोबेबली, सो इट विल से आई एम गोइंग टू ट्रांसमिट हेयर। सो अभी तक इसने ट्रांसमिट कर दिया, जस्ट नाउ कंप्लीटेड, दैट मीन्स यहां तक ट्रांसमिशन हो गई। दिस इज हिस्ट्री, हो चुकी बात। What about this? This is the future plan. This is the future plan कि कौन कब ट्रांसमिट करेगा। तीनों को पता है कि नहीं, सबका अपना अपना टाइम और दूसरे का भी टाइम। Do we agree this? So information receive और information देना सब कुछ 1 मिनट में हो जाएगा ना ये? 1 मिनट में क्यों? ये तो हो रहा है 26.67 मिली सेकेंड्स में ना। 1 मिनट में जो है इसमें तो 2250 जहाज ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक मैं ट्रांसमिट करता हूं 26.67 मिली सेकेंड। अगली बार मैं डायनेमिक डेटा अपना पोजीशन कोर्स स्पीड का ट्रांसमिट करूंगा तो 10 सेकंड बाद करूंगा। कितने देर में करूंगा? वही 26.67 मिली सेकेंड। फिर यहाँ पे ट्रांसमिट कर दूंगा तो मैं आगे के स्लॉट रिजर्व कर दूंगा। जैसे राइट नाउ आई एम टेकिंग द क्लास, दिस इज द थर्ड क्लास, आई एम डिलीवरिंग माय एएस लेक्चर, और जाते जाते बोल जाऊं कि कल की तीसरी क्लास मेरी रहेगी। अभी जो इसके पहले वाले सर गए हैं पिछली क्लास में, वो उन्होंने अपना चैप्टर पढ़ा दिया और जाते जाते बोल गए कि कल मैं छठी क्लास लूंगा। तो आपको मेरी भी पता है कि मैं तीसरी क्लास कर लेने वाला हूं। पिछले वाले सर सेकंड वाले छठी क्लास लेंगे, तो आपको फ्यूचर प्लान, कल का सारा प्लान पता हो जाएगा या नहीं? यस सर। लेकिन यहाँ पे लिमिट है कि 6 ही क्लास होते हैं तो 6 लोग कर सकते हैं ऐसा काम। यहाँ पे कितने कर सकते हैं एक दिन में? यहाँ 6 क्लास। यहाँ पे 1 मिनट में कितनी क्लासेस अवेलेबल है? 2250। 2250। तो 2250 लोग काम कर सकते हैं ये। यस सर। Understood? So what is happening is that the future plan is always known to everybody. All the ships which are there, they have their plan known to each of them. सी को पता है कि मुझको यहां ट्रांसमिट करना है, बाकी में इधर उधर नहीं करना। सबको बाकी को पता है कि सी यहां पे करेगा ट्रांसमिट, मुझको यहां नहीं करना। बी का अपना टाइम है, बी को मालूम है कि मुझको यहां ट्रांसमिट करना है। इस समय सी और ए विल नॉट ट्रांसमिट। So this is what is TDMA, time division multiple access. But for that, कहीं गलती से ओवरलैप भी होता है सर, गलती से ओवरलैप भी हो सकता है। बहुत हो सकता है, बहुत हो सकता है, बहुत हो सकता है। ये सब प्रैक्टिकल सिचुएशन है, इसके लिए बहुत सारे स्मार्टनेस भरी गई है। नहीं सर, जब ज्यादा शिप्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा शिप्स हो जाते हैं, तब तो ओवरलैप कर जाता होता है ना सर। कहीं कहीं का डेटा भी नहीं सही से दिखाता। एकदम सही बात,
एकदम सही बात। लेकिन AIS के ऑपरेशन में बहुत सारी स्मार्टनेस भरी गई। एक तो ये कि कितने जहाज हैं उसके बेसिस पे थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस करता है ये। व्हाट इट इज डूइंग, थोड़े से आगे और थोड़े से पीछे में कहीं स्लॉट रिजर्वेशन करता है। अभी हमने देखा कि अ शिप एट 13 knots विल ट्रांसमिट एवरी 10 seconds, करेक्ट? डायनेमिक डेटा फॉर ए शिप, अभी जो ट्रांसमिशन Yes. शेड्यूल बात करें 10 seconds. एवरी 10 सेकेंड, तो वो हमेशा 10 सेकेंड पे ही नहीं रहता है, वो कभी 10 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड माइनस करता चलता है, ताकि एक बार कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो अगली बार कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, क्योंकि थोड़ा आगे थोड़ा पीछे ये रैंडमाइज होता रहता है। तो एक तो ये जो स्लॉट रिजर्वेशन करेगा वो बाकी लोग कहाँ कहाँ हैं, कितने लोग हैं, क्या हिस्ट्री है, कितनी ट्रांसमिशन हो रही है, उसके बेसिस पे थोड़ा करता है, प्लस उसमें थोड़ा आगे पीछे भी करता रहता है। और उसके साथ एक और स्मार्टनेस है कि ये सब करने के बाद भी बात फंस गई कि यहीं पे बी भी है, यहीं पे ए को भी ट्रांसमिट करना है, तो थोड़ा आगे पीछे देखता है। जो सबसे दूर वाली जहाज होगी, इफ द सिचुएशन इज रियली स्ट्रक, then the slot which is reserved by a ship which is far off from me, सबसे दूर में है, उसके ऊपर ट्रांसमिट कर दे। सपोज मुझको ट्रांसमिट करना है, आई एम नॉट फाइंडिंग अ फ्री स्लॉट, कहां करूं, सब भरा हुआ है, तो आई लुक फॉर अ स्लॉट विच इज ऑक्यूपाइड बाय अ शिप विच इज हैविंग लॉन्ग डिस्टेंस, मैं उसके ऊपर ट्रांसमिट कर दूं। सर इसका भी टाइम फ्रेम 26.67 सेकंड ही रहेगा? हाँ, मतलब तो स्लॉट वही रहेगा, वही स्लॉट रहेगा? वही रहेगा, हाँ स्लॉट वही रहेगा। इतनी सी देर में वो ढूंढ लेगा किसको किसके पे लैप करना है, ओवरलैप करके मैंने देना डेटा? भाई साहब, आजकल जो ये है क्या कहते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन कितनी फास्ट हो रही है, डेटा प्रोसेसिंग कितना फास्ट हो रहा है। हम जीबीपीएस बोलते हैं ना, जीबीपीएस गीगा बिट्स पर सेकंड, एक सेकंड में गीगा। व्हाट इज गीगा? इज 10 to the power 9। मतलब एक सेकंड में जो प्रोसेसिंग आजकल हो रही है, मान लो 2 जीबीपीएस अगर हमने कहा बात सिस्टम ऑपरेशंस में, दिस इज लाइक 2, और उसके पास जीबीपीएस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने बिट्स ट्रांसमिट मतलब प्रोसेस हो सकते हैं एक सेकंड में। तो एनीवे हम इतना मान के चल सकते हैं। सही है सर, फिर हो जाएगा। चलो कन्विंस हो गए, कन्विंस हो गए, बहुत बढ़िया बात। सो डेटा प्रोसेसिंग इज रियली बिकमिंग फास्टर एंड फास्टर, सो इट इज पॉसिबल एंड वी शुड नो कि हाँ होता है यार, होता है। हम तो जान रहे हैं कि क्या होता है, हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि कैसे होता है। सो वी आर ट्राइंग टू लर्न अबाउट बेसिक्स ऑफ द सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक्स के भीतर में तो बहुत सारी चीजें मुझको भी पता नहीं हो, सो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग वी आर गेटिंग। So this is what is called TDM. For this to work, all the clocks has to be same or not? आपको अभी Yes. क्लास शुरू होने से पहले मैंने कहा था कि ओके we'll start at 11:40. So right at 11:40 I came in the class. You also came at 11:40. लेकिन जब आप 11:40 पे आए तो मैंने कहा कि लेट क्यों हो गए? आप कहते हैं कि क्यों सर, 11:40 पे बुलाया था, 11:40 पे तो आया हूं, देखो घड़ी मेरी। मैं कहता हूं कि देखो मेरी घड़ी 11:45 हो रहा है, 5 मिनट लेट हो। दैट मीन्स दिस सिस्टम विल नॉट वर्क इफ द क्लॉक्स आर डिफरेंट। सो हाउ टू मेक इट पॉसिबल दैट ईच शिप is having same time so that they can understand the time slot reservation also and follow it. Atomic clock.
सारे जहाज का क्लॉक कैसे सिंक्रोनाइज हो? सर एटॉमिक क्लॉक यूज करता है ये। जीपीएस एटॉमिक क्लॉक नहीं जीपीएस यूज का करता, तो सर रहता ही है, जीपीएस का जहाज में टाइम कोई तो सेम एटॉमिक ही क्लॉक रहता नहीं है। होता, जहाज में जीपीएस कोई टाइम एटॉमिक जो क्लॉक। है सर, जीपीएस टाइम अगर यूज करेंगे तो सेम ही जीपीएस रहेगा। जीपीएस से सारे क्लॉक्स अपडेट होते हैं, कॉमन सोर्स है सैटेलाइट, वहां से करेक्शन आती है, सब जहाज उस एरिया में जो है एक ही टाइम अपडेट करते चलते हैं, एंड सो सारे जहाज का टाइम एक ही है, सिंक्रोनाइज होता है, एंड सो दिस सिस्टम वर्क्स क्वाइट नाइसली। प्लस देयर कैन बी मोर ऑफ टेक्निकल empowerment to the system, which we are not aware of, which we are not talking about, we don't need to talk about. System is working. How? SOTDMA. What is SOTDMA? Transmission of data plus reservation of next slot. Transmission of data plus reservation of next slot. Future plan known to everybody. Everybody transmits on its own reserved slot, and do not transmit, do not disturb to other ships. Also there, जब बात हो रही तो बोल दूं, also there is smartness given to the system. अभी मैं चल रहा था सीधा, अब मैंने ऑल्ट्रेशन कर दिया तो मेरा टाइम स्लॉट चेंज हो गया ना। पहले मैं 12 नॉट पे चल रहा था तो 10-10 सेकंड में ट्रांसमिट कर रहा था, अब ऑल्ट्रेशन कर दी तो 3.5 सेकंड हो जाएगा। तो 10 सेकंड वाली जो ट्रांसमिशन थी उसका रिजर्वेशन क्या होगा, और अभी जो 3.5 सेकंड में करना है तो अब मैं क्या करूं, यहां तो बुक्ड है सारे, ऐसे स्मार्टनेस दिए हुए हैं। The systems are designed to handle these situations, and it is working quite nicely. It is understood that even if the number of ships increase by 400%, अगर 100 जहाज आज की डेट में 400 हो जाएंगे तो भी सिस्टम काम करेगा। So this is what is SOTDMA. Why we are calling it SOTDMA? इस पूरे सिस्टम में हैव यू सीन एनी एक्सटर्नल कंट्रोल? कोई है जो बता रहा है कि भाई तुम ट्रांसमिट करो, तुम चुप हो जाओ, तुम ट्रांसमिट करो, तुम चुप हो जाओ? एनी एक्सटर्नल कंट्रोल यू आर सीइंग हियर? नो सर। और ओनली द पार्टिसिपेटिंग AIS devices, they are managing themselves. चल भाई मिल के काम करते हैं, बाहर वाले को घुसने नहीं देंगे। क्या हो रहा है? Are we managing all the AIS devices managing themselves, or any external control you see? Managing I by suppose themselves. no external control. No, And sir. that is why it is called self-organized time division multiple access. Here time is divided, other places somewhere frequency is divided, small channels, sometimes code is divided, different kind of codes. This is time is divided, TDMA and SOTDMA, because slot reservation is happening, and it is happening self managed कि कौन कब कहां ट्रांसमिट करेगा, कैसे करेगा, आपस में ही मिलके काम करते हैं। So this is SOTDMA. Are we good about this? Yes, sir. Yes. Okay. Modes of operation. The AIS works in 3 modes. Autonomous mode, or also called continuous mode. The second mode is called controlled mode, or assigned mode. And third one is called old mode. There are 3 modes in which it can operate: autonomous or continuous mode, controlled mode or assigned mode,
and third one, cold mode. What we have just been discussing, slot reservation, self-managed, is this. Autonomous means independent, no external control. So अभी जो हम बात कर रहे थे, that was autonomous mode. All ships working with each other, managing themselves, no station controlling their operation, सब मिलके आपस में काम कर रहे थे जितने जहाज थे उस एरिया में. Most of the time the AIS will be working in this mode only. प्रायः ऐसा ही काम करते रहेंगे. But when the ship is coming in the area of a shore-based authority in the coastal area, they can send, let us say VTS. VTS can say, ship A, you transmit every 6 seconds. Ship B, you transmit at every 7 seconds. Ship C, you transmit every 4 seconds. Or all of them at 7 seconds. So VTS can send a command to ship A, B, and C and all the ships and change their rate of transmission. No matter what speed you are doing, you transmit at 6 seconds, you transmit 7 seconds or 4 seconds. Is the ship A, B, and C in autonomous mode now, or is it controlled by somebody else now? Control mode, sir. Control. Very good. They have been assigned a new rate of transmission, 6 seconds, 7 seconds, 4 seconds. New rate of transmission assigned to them by the VTS. So, are the names valid? Controlled mode and assigned mode? VTS is controlling you, Yes. so control mode. New rate of transmission assigned to assigned mode. Both the names are justified. It can also change the frequency of transmission. This will be working normally on AIS-1, AIS-2, which is the international frequency. But the VTS has got a local channel for AIS operation. So they can send a command to all the ships and change the frequency of transmission. A is not transmitting on this. A, B, C, all transmitting on the local channel. जैसे जहाज में VHF में we know channel 16 is common channel for call and reply. बट हम पोर्ट में जाते हैं तो पोर्ट का अपना चैनल होता है, हम पोर्ट के चैनल पे कॉल करते हैं. सिमिलरली एक हमारे पास इंटरनेशनल वाटर्स के लिए ऑटोनॉमस मोड के लिए AIS-1, AIS-2, two frequencies are available, but the VTS, the shore station, may have a local channel for them, and they want all the ships in this area to transmit on their channel. So again, new frequency assigned for all of them, being controlled by the VTS, and hence the name controlled mode or assigned mode. When the ships are going out of the service area of the VTS, बाहर निकल गया, तो उसको ये कमांड्स थे वो आने बंद हो जाते हैं क्योंकि ये सर्विस एरिया से दूर निकल गया है. तो थोड़ी देर के बाद, थोड़े घंटों के बाद वापस अपने पुराने ऑटोनॉमस मोड में आ जाता है. So as long as they're in this area of the VTS, they will be in control mode, but VTS से बाहर हुए तो वापस ऑटोनॉमस मोड में आ जाता है. Can somebody tell me something about 2 more minutes? Can somebody tell me what is polling mode? अगर कभी सुना हो पहले. सर इसमें मांगते हैं, बीच में अगर कहीं इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मांग लेंगे. Very good, very good. Polling is something like if you have your ship
और शिप में AIS लगी हुई है, VTS यहाँ है। इसने एक क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारी पोजीशन क्या है, इट विल रिप्लाई विथ द आंसर। इसने एक क्वेरी भेजी, पूछा पोजीशन, ये पोजीशन भेज देगा। इसने पूछा योर ID प्लीज, इट विल सेंड द ID आंसर। एक क्वेश्चन, एक आंसर, जॉब डन। It is interrogation and reply. So AIS is working in this manner also. It responds to a query. It can be ship also, but ship के साथ generally होता नहीं है ये. So the shore-based authorities can ask for the ID or static data, dynamic data, whatever data they want. They might ask for one, and it will reply. Supposing एक कोस्टल एरिया से कोई जहाज पार हो रही है, the VTS wants to know who is this. तो जो डेटा ट्रांसमिट हो रही होगी उससे हो सकता है, but at this moment they particularly want about this ship, so they can send a query to the ship and it will respond. जब ये क्वेरी भेजी जा रही होगी तो शिप या तो ऑटो मोड में चल रहा होगा, ऑटोनॉमस मोड में, या कंट्रोल मोड में होगा। पहले से तो काम कर रहा होगा ना किसी दो मोड में। बीच में ये कमांड आ गई तो ये जवाब देके और अपना मोड मेंटेन किए रहता है। जिस मोड में चल रहा था उस मोड में चलता रहेगा। अगर 6-6 मिनट में ट्रांसमिट, 6-6 सेकंड्स में ट्रांसमिट करना था तो वो 6-6 सेकंड में करता रहेगा। बीच में क्वेश्चन आया, जवाब दिया, बात खत्म। So the old mode does not affect the operation of other two modes. It does not conflict there. जो चल रहा था पहले, हर 10-10 सेकंड में ट्रांसमिशन हो रही थी, बीच में पोलिंग का कमांड आया, इसका आंसर दे दिया और ये अपना काम चलता रहा। So polling does not disturb the other two modes of operation. ठीक है? Yes. Are we good? So these are the modes of operation. अक्सर क्वेश्चन आता है इसमें से, what are the modes of operation? ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने के लिए कुछ नहीं है, बट 10-12 नंबर का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है इसमें। So be prepared. With this, I have taken extra 5 minutes today. अपने टाइम से, वैसे उधर 10 मिनट लॉस भी हो गया था। चलिए बाय बाय। Any questions that I need to answer? एक सर एक बुक थी सर, मैं नाम भूल गया हूँ सर, उस पे ग्लोब सा बना हुआ था, वो ब्रिज नेविगेशन की बुक की है, सेकंड मिनट के टाइम पे था सर, नाम भूल गया किस बंदे की बुक है वो। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन एड। हाँ सर, हाँ यही है सर, मॉडर्न की थी। भाटिया एंड सिन्हा। हाँ सर, ये बुक से पढ़ सकते हैं सर? हाँ उसे पढ़ सकते हैं। I am going to send you the notes also. अभी न्यू बैच के लिए नहीं दिया है, but I will have all these notes sent to you. ओके ओके सर, ठीक है। I will be sending 3 kinds of note. IMO performance standards of all, जो कि शॉर्ट में किया हुआ है, पूरा डॉक्यूमेंट नहीं, शॉर्ट में जितना चाहिए उतना। IMO performance standards, all the answers in the question answer form, notes for study, and you have classroom here. फिर तो हो जाएगा सर, इतने से ही हो जाएगा। एकदम पक्की बात होएगा। एकदम सर ये ईमेल आईडी पे भेजोगे आप? What you need to obtain is the magnetic compass book. This is what you need to find out. सर किसकी है सर ये? ये कैप्टन तिवारी की है। ओके सर, कैप्टन तिवारी। I haven't made, क्योंकि मैं पहली बार शुरू कर रहा हूँ, मतलब एक ही बैच हुई है, तो इसका नोट्स मैंने अभी अपना बनाया नहीं है। गॉड विलिंग, आप हो सकता है आपको नहीं मिल पाई है, अगले बैच में मिलेगा। लाइफ गोज ऑन। तो once I make the notes out of this, then I will be forwarding that also. जारो कंपास की नोट्स मैंने बनाई है, वो मैं आपको भेजता हूँ। जारो कंपास आप वो पढ़ लेंगे, ऑल गुड, नो प्रॉब्लम। हाँ सर, जायरो वाले तो आपके नोट से हो जाएगा सर।
चलिए, bye bye, take care, signing off. ओके ऑल राइट, लगता है कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, चलो डन ऑलरेडी, राइट? यस सर Okay, so basic features are all okay. Basic features of AIS all done. Questions are generally asked from here. How the AIS works. Phase 2 में working of AIS उतना नहीं पूछते हैं, but yes, SOT DMA may be asked. The principle of operation, mode of operation, because it is related directly to the working of the system and usage of the system, so that may be asked. Data transmitted, not so much, but yes, it is asked. So anyway, we have to be prepared for all questions. Something like, usage of AIS. AIS can be used smartly in so many ways. We have seen the basic purpose that it is to enhance the safety of navigation. Additionally, it also helps in controlling maritime pollution by means of simple surveillance. If you are under observation, if you know somebody is watching, then you would definitely not like to get caught doing something wrong. So it encourages control of marine pollution. Thirdly, search and rescue में भी इसका use था. The AIS can also be used sometimes by shore stations, sometimes also by ship stations smartly in other ways also. Major function remains safety of navigation. So safety of navigation कैसे enhance होगा? There are a couple of situations that we can talk about. Number one situation, collision avoidance. AIS can be used as a collision avoidance tool, but not to be dependent on. Underline, bold letters, not to be dependent on AIS for 100%. Sole information to be obtained from AIS, no, no, no. It is additional information. Bridge composition of watchkeeping remains as it is. Presence of AIS does not change anything in the bridge watchkeeping. So as a collision avoidance tool, it can be used because it provides a lot of information, additional information to the navigator. You have been using it on board ship, so I don't actually need to tell you how it is helpful. You can identify a target. You can communicate with them just in case required, but the communication need is further reduced because of AIS. Safety of navigation, collision avoidance can be supported by the shore stations also. Collisions, etc., do take place, especially in the coastal areas where density of the ships are more. VTS is generally responsible for managing traffic in their area. So they are observing all targets on their radar. With the radar, they have also got AIS information that says who is who. इसका एक एग्जाम्पल हमने शुरुआत में बात करी थी, how I have observed the beautiful use that the AIS can provide, that we were called by name and told, the VTS told us that we are going to run over a shallow patch. So monitoring is done. They can also guide traffic, as the example said. VTS can additionally use this AIS in a smart way to further add on to coastal navigation. Supposing there is a ship, dredger for example, doing some kind of operation. Maybe there is a fishing boat who has put the net and he is stationed at some location. Now these two may not be having AIS on board. The fishing vessel and the dredger may not be having AIS.
So we will go to the board to explain this, to support my speech with diagrams and all that. So let me go to the board. Board visible? Yes, sir. Okay, so suppose there is this VTS here on shore, your ship here, maybe some other ships going there, and there is a dredger here doing some kind of operation. There is a fishing vessel who is engaged in fishing. Since we are going like this and going like this, these two are threat to navigation, basically. If we hit, they also die, we also die one way or the other. But on our screen, they are not visible because they do not have AIS. रडार से पिकअप कर लिया, बहुत अच्छा. पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन नहीं है हमारे पास. The VTS here on their radar, they are seeing the two ships here and the dredger and also the fishing boat. Since they can see it on their radar, what they do, they make a message on their VTS, on their AIS about dredger position, course speed, identification. If they have spoken with on the VHF, with the obtained information, the VTS making a message for dredger. इसका लोकेशन यहाँ पे है, dredger है, ऑपरेशन वगैरह वगैरह. The fishing boat also has communicated to them their position and all that, or maybe not even done, but being observed by the VTS. These information is transmitted as AIS data by the VTS. Now on my screen, on my radar screen or AIS, I am seeing the coastal area. I am seeing other ship here. I am already moving at this. This is my ship. And I see that there is a dredger and there is a fishing boat here. With positive identification of the AIS data that has been transmitted by VTS. It was not transmitted by dredger, not transmitted by fishing boat or some other kind of crafts, but it is transmitted by the VTS. And I am able to see this on my screen. So this was a fake transmission basically, but for good intention, good purpose. This would enhance safety of navigation. Definitely, when I can see all this, अगर खुदा न खास्ते मेरा रडार पिकअप नहीं कर रहा था, for example, then I will get it through AIS. अगर दोनों कर रहे थे तो दोनों का information आएगा. It may be possible that this is all right, but the dredger is showing AIS here, but I see a target here or I see a target here. That means there is an anomaly. What my radar is saying is not what the AIS is saying. It is very much possible. Why? Because this data is not transmitted in real time by these two, but it is transmitted by the VTS. हो सकता है जब ट्रांसमिट कर रहा हो तो ड्रेजर शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया हो, फिशिंग बोट शिफ्ट होके यहाँ पे हो गया हो. So this kind of information, when it is transmitted by the VTS, this is called pseudo AIS. This transmission, which is made for a dredger and fishing boat by the VTS, which is basically a fake transmission, but we don't call it fake, we say pseudo AIS. And
it has to be clearly marked with a symbol indicating that it is pseudo AIS, so that when you see it on the screen, you can identify that these are pseudo AIS. It is transmitted not by these stations, but some other authority. What should be your reaction? What should be your response? Extra caution. Because what it is showing here may not exactly be that way. हो सकता है थोड़ा इधर थोड़ा उधर. There can be some error in the data here. And that is the whole idea behind identifying with a symbol that it is pseudo AIS. So objects there not transmitting AIS data, the AIS data transmitted by VTS is called pseudo AIS. Another हाँ बोलिए सर जो ये वो ट्रांसफॉर्म करेंगे, बट ये हमारे जैसे नॉर्मल स्क्रीन पे आता है वैसे ही आएगा कि जो हमें मैसेज रिफ्लेक्ट होता है एआईएस पे सर उसमें आएगा ये आपके एआईएस के एमकेडी मतलब मिनिमल कीपैड डिस्प्ले, उसके स्क्रीन पे भी आ जाएगा, डेटा में भी आ जाएगा. अगर आप एआईएस को ग्राफिक मोड में कर रहे हैं तो ग्राफिक मोड में भी आ जाएगा, और वो आपके रडार पे भी आ जाएगा अगर एआईएस को इंटरफेस किया है. जैसे नॉर्मल सब आता था वैसे ही आपके रडार पे आ जाएगा. EIS symbols are also there, like ARPA we have symbols, target being tracked, target under scan, sleeping target, all that. So there are also symbols used in case of AIS. दोनों के सिंबल्स अलग अलग होते थे, तो कुछ एक्सरसाइजेस चल रही हैं ताकि दोनों के सिंबल्स को सिंक्रोनाइज किया जाए ताकि कंफ्यूजन ना हो. यहाँ पे X would mean something, यहाँ पे X would mean something maybe totally different. तो उसको सिंक्रोनाइज करने का प्रोसेस वाज ऑन. I don't know where it has reached right now, but everything you will get on your MKD. जो डेटा आपको दिख रही थी उस डेटा में आपको ये ड्रेजर का भी रिपोर्ट मिलेगा, फिशिंग बोट का भी मिलेगा, शिप ए जो थी यहाँ पे ए का भी रिपोर्ट मिलेगा, उसकी पोजीशन, कोर्स स्पीड, डिटेल जितने हैं उतना सब मिलेगा. If you convert this into graphical presentation, तो आपको मालूम है ये रेंज रिंग्स के साथ fishing boat and this target will be visible. This is AIS MKD, और इसको आपने रडार से इंक्लूड कर दिया, इंटरफेस कर दिया, then you will get it on the radar also. Did I answer your question? Yes sir. Okay. So we know now what is pseudo AIS. Next comes something like virtual IS. I suppose you are all aware of this. So in the pseudo AIS, how come BTS will know that these are the targets which you're not able to see in our AIS? It's just that BTS will confirm the ship which he can see. Are we getting the same signal? It's like that, or BTS will specifically mention these are the AIS targets which are not seen on the AIS? I mean, No. doesn't make any. On the radar, your radar, you are seeing the coastline. You are seeing a target here. You are seeing a target here. You are seeing a target here while you are moving. This is your position. The VTS here, they also have a radar. Their radar says that there is a data here, there is a target here, there is a target here, and there is a target here. All four are being observed by the VTS. Since these two are having AIS, so their name is visible here. Their details are available. AIS details are available because they are transmitting.
but these two are not transmitted. Here, observation, the VTS is observing that there are two targets, but they are not transmitting data. So one way to confirm is that these two are not identified. They may contact these two ships to find out what are you doing here. वो बोलेगा सर मच्छी बोट है, नेट डाला है, तो अपना पोजीशन बताओ. पोजीशन वैसे निकल जाएगा यहाँ से भी. Who are you? Dredging operations going on. So okay, they identify this is treasure. In their message box, they make the message for treasure and fishing boat and they transmit. Do I receive it now? Would I receive this information now, which is transmitted by VTS? Yes, sir. So now it is identified that it is a treasure, name so and so, details available. Fishing boat, details available. This already transmitting, detail available. Do we have a complete picture? Your question answered? आपका क्वेश्चन आंसर हुआ? Yes, sir. अरे वर्चुअल एआईएस की जरूरत हो रही है कि जहाज पे दिखाएं कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल टीएसएस में अगर दिखाना चाहते हैं सेपरेशन लाइन तो उधर भी दिखा सकते हैं ना उससे? नहीं समझ में आया, थोड़ी आवाज बहुत सारे क्लियर नहीं, बहुत अच्छी क्लियर नहीं आई, फिर से एक बार बोलेंगे? सर वर्चुअल एआईएस के लिए नेसेसरी थोड़ी है कि मतलब जहाज पे ही दिखाना होता है. लेट्स से कि अगर एक ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम है और बीच में एक ट्रैफिक सेपरेशन लाइन है, तो अगर मैं उस ट्रैफिक सेपरेशन लाइन का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट और एक मिडिल पॉइंट ले लेता हूँ और उसको मैं वर्चुअल एआईएस के थ्रू दिखाना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकते हैं. हाँ, वो तो अभी हमने वर्चुअल एआईएस तो बात नहीं किया ना. आई वाज स्टार्टिंग दिस टॉपिक व्हेन सूडो एआईएस का क्वेश्चन वाज रेज्ड, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट सूडो एआईएस राइट नाउ, नॉट वर्चुअल एआईएस. दोनों में डिफरेंस है क्या सर? मतलब सेम ही होगा ना? Yes, there is a difference between the two. There is a difference between the two. How? So there is this shoreline. When the ship is approaching here or ship is trying to reach here, maybe there is a jetty also. Channels are made by buoys. There may be a separation scheme, TSS. The ship has to go through this. So there are floating buoys basically. What would it not be nice idea if we can identify each of the buoys so that I can see it on my radar? On my radar, I am seeing this jetty here. These buoys by radar may be picked up, may not be picked up because very small dots. If I placed an AIS here, then it would be visible like this or not here. मेरे रडार पे ये पिक्चर दिख जाएगी या नहीं? अगर एएस लगा दिया तो दिख जाएगी. अगर लगाएंगे इसको, एआईएस को लगाएंगे तो वो जरूरी नहीं है कि सर इस जगह पे कुछ होगा ही होगा. वर्चुअल है वो एआईएस. मतलब मैं आ रहा हूँ, मैं बैकग्राउंड बना रहा हूँ अभी. मैं बैकग्राउंड बना यस मैं बैकग्राउंड बना रहा हूँ तो सारी कहानी का. तो देयर इज ए फ्लोटिंग बॉय, देयर इज एआईएस ऑन टॉप ऑफ दैट. वी हैव टू वॉच दिस बॉय. कभी इधर शिफ्ट होती है, कभी उधर होती है, कभी एंकर लाइन टूट जाता है उसका, कभी गायब हो जाती है. तो एक मैनेजमेंट इसका. दूसरा एएस, कभी एंटेना टूट गया, कभी बैटरी खराब, कभी कुछ, तो ये भी मैनेज करना पड़ता है. लॉट ऑफ ऑपरेशन. What is the smart way that if there was EIS, I could see EIS picture like this? If the boy was there, I could see on radar or may not see on radar. But the smart thing, how it can be used, is that we have nothing here.
No floating buoys, no AIS, nothing here. I am still getting this picture on my radar or AIS. मेरा AIS है. Come again. Okay. My AIS is interfaced with the radar. I am seeing all this picture on the screen. I am still getting it identified, number 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc. All buoys visible to me, TSS visible to me on my screen. I can very well safely navigate through this. The thing that there is nothing out at sea, plain water, nothing. What is happening? The VTS here is again making a message sitting in the cabin. Buoy number 1, 2, 3, 4, सबका लोकेशन ये सब मैसेज बना के, and they are transmitting AIS data for the ships. The ship receives this information, puts it onto the radar, and we get a picture like this. हिंग लगे ना फिटकिरी और रंग चोखा, ना कुछ ऑपरेशन कॉस्ट, ना मेंटेनेंस, ना कुछ. कमरे में बैठे बैठे पूरा एड टू नेविगेशन हो गया या नहीं? यस सर मेरा ये क्वेश्चन है सर कि जब ये वर्चुअल वहां पे उसने बॉय बना दिए, हमें वीटीएस ने भेज दिया, सर उस जगह पे डेंजर होगा कि नहीं होगा सर? मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम चले जाएं बेसिकली, मतलब अगर कोई वर्चुअल एआईएस है भी वहां पे, बॉय फ्लोटिंग बॉय टाइप का, अगर उसने एड टू नेविगेशन दिया है, अगर उस जगह पे वर्चुअल है वो, तो हम उसके ऊपर से जा सकते हैं कि नहीं सर? बिकॉज वहां तो कुछ है नहीं सर. ओके, वहां कुछ नहीं है. यहां पे बॉय जो डाली गई थी पहले, वो क्यों डाली गई थी? क्योंकि दिस वाज नो गो एरिया. यहां पे बॉयज क्यों डाली गई थी? क्योंकि इट वाज नो गो एरिया. दिस एरिया वाज ऑल राइट. टू मार्क दिस सेफ एरिया वी हैड द बॉयज. करेक्ट? दैट वी कैन travel through this, we can sail through this, is the reason why this was done. How it was identified that this is no-go area? Some survey being done, soundings taken कि यहाँ पे shallow patch है, यहाँ पे shallow patch है, वगैरह वगैरह. Yes sir. तो जब ये AIS का लोकेशन हम डालेंगे, would you want, मान लीजिए दो बीच में अगर दो बॉयज है और बीच में जगह है, would you want to go like this? कि चल यहाँ पे तो कुछ नहीं है, मैं इधर से निकल के इधर चला जाता हूँ. Would you want to go there? Negative sir. No, Why not? Why not? ग्राउंड हो जाएगा. Ground हो जाएगा. So when you are seeing this on your screen, are you seeing this on the radar? Would you want to go through this like this? No. No. Since you cannot see the boy here, number 3 for example, आप नहीं देख पा रहे हैं, would you want to go like this? Running over boy number 3, because there is nothing here, so would you want to go running over this? नहीं sir. So that is why where not to go is clearly identified here for you, is it not? It is clearly identified where not to go. This is your area where you can pass through. So you will definitely not like to go. सामने चार्ट है ना, रडार पे चार्ट दिख रही है. चार्ट मतलब वो पेपर वाला चार्ट नहीं. यहाँ पे आपको कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं, किस एरिया में सेफ है, everything is visible or not. As a responsible officer, you will be taking this place, not this side, not that side. Is that correct or not? Yes sir. अब मान लीजिए अगर नहीं होता, यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ भी कुछ नहीं होता, तो you could go anywhere and run aground. तो TSS का तो काम ही यही है कि ट्रैफिक और जो ये लेन सिस्टम है, ट्रैफिक लेन सिस्टम और चैनल्स एंड बॉयज,
That is all to enhance safety of navigation. तब ताकि आप जब वहां जाएं तो you can remain safe all the time. So, are we good? सर तो इसको इसकी टर्म वर्चुअल एआईएस है, और अगर कोई जहाज अपनी इंफॉर्मेशन रिले करता है कि मेरा एआईएस दिखा दो, वो सूडो एआईएस है। नहीं, हाँ ठीक है। The main difference between pseudo AIS and virtual AIS, virtual reality में क्या होता नहीं है, लगता है। वर्चुअल गेम में क्या, मुझको लगता है कि मैं टेनिस के कोर्ट में गेम खेल रहा हूँ, हाथ हिलाता हूँ तो बॉल से लगती है, मैं होता हूँ कमरे में और लगता है कि मैं टेनिस खेल रहा हूँ। But Dredger was here. Was there a physical body in the water? नो सर। ट्रेजर था ना पहले के केस में जो हमने सूडो किया था। हाँ, सूडो में रहेगा, वर्चुअल में नहीं रहेगा। Exactly. The difference is कि you are seeing this picture on your radar like this, the shoreline. You are seeing the dredger here because it has been transmitted by this as pseudo AIS, and you are also getting this picture. You are also getting this picture because there is nothing, but it is being transmitted as buoy number 1, 2, 3, 4 by the VTS as virtual AIS. सर तो वर्चुअल एआईएस में भी सर रहता है सर जगह पे। अब मैं यही क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा था बिकॉज साइन ऑफ से पहले सर हम पोर्ट पे थे और उसका चैनलिंग में था, उसके चैनलिंग में सिर्फ वर्चुअल एआईएस दिखाए हुए थे। तो उस टाइम पे जब हम आगे क्रॉस कर रहे थे तो दोनों साइड पे बॉयज थे सर, उसके ऊपर उन्होंने ऐसा दिखाया हुआ है कि वर्चुअल एआईएस है, तो इसलिए बहुत कंफ्यूजन हो रहा था वहां पे। ओके ओके। देन और सर ये आप पैसेज में जा रहे हो, इतना छोटी सी जगह है सर, वो उसमें कंफ्यूजन हो रहा है वहां पे। मान लिया। आइडिया इज टू एनहांस सेफ्टी ऑफ नेविगेशन। चार्ट में virtual AIS is clearly depicted by a symbol that this is virtual AIS. There may not be a floating buoy here. You are only going to receive it through radio signals of AIS. Now, from ideal situation, there are so many variations. Always, as a smart person, as a thinking person, we should know what are the variations possible and be ready for it. नेता लोग इतना कहानी बताते हैं हमें, रियलिटी में जाते हैं तो कुछ और होता है। तो इट इज पॉसिबल। वर्चुअल एआईएस का मतलब है कि देयर मे बी अ बॉय, मे नॉट बी अ बॉय। वर्चुअल एआईएस इज रेफरिंग टू अ सिचुएशन वेयर देयर मे बी अ फिजिकल बॉय, मे नॉट बी अ फिजिकल बॉय। जैसे इंग्लिश चैनल के एरिया में जाएंगे तो यू हैव ऑल वर्चुअल एआईएस. You don't see the boys there, nothing floating, but it is visible on the AIS. In your example, as you're saying, they have shown that it is virtual AIS, but there is also a floating object. There can be lot of possibilities. उनको हटाना था, अभी नहीं हटा है। उन्होंने एक अपडेट भेज दिया कि हम लोग यहाँ वर्चुअल AIS लगाएंगे, अपडेट भेज दी, चला गया, पब्लिश होके आ भी गया चार्ट में कि वर्चुअल एआईएस है। उनका उसके पेट खराब हो गया, उसका अभी शिफ्ट नहीं किया, रिमूव नहीं किया बॉय को। प्रैक्टिकल सिचुएशन, पोजीशन भी तो सेम नहीं रखी सर। वो एक बॉय इधर लग रहा है, साथ में वर्चुअल इधर रख रहा है, जगह ही नहीं है उसमें सर। ऐसे लग रहा है निकलने की जगह ही नहीं है वहां पे, इतनी कंफ्यूजन हो रही है सर। यहाँ बॉय भी है, बॉय की लाइट दिख रही है, साथ में वर्चुअल एआईएस थोड़ा सा आगे है, तो वो पैसेज ही नहीं लग रहा कि कहीं जाने का पैसेज है भी कि नहीं उसके अंदर से। अच्छा, इसी ये जो आपने बात बोली ये बता रहा था मैं उसका सर। Okay, I understood. These are some practical situations which we are faced with sometimes, but that situation what you're talking about has got nothing to do with the functioning of AIS actually. AIS के ये features हैं, इसको ऐसे smartly use कर सकते हैं, is what we are talking about. Practical life में you may come across some deviations, some other kind of situations, which actually is because of some other problems, not because of the problem of the AIS.
it is because of port management, harbor management, channel management, everything that is attributed to some other problems. The thing that you are saying, no place to go, एक virtual यहाँ पे, physical यहाँ पे, where to go through, practical situations, I do appreciate, but that had nothing to do with functioning of AIS. Are we good? तो सर जो शिप में जो AIS हमारा पिक करेगा दूसरे का सिग्नल, उसमें कहीं इंडिकेटिव होता है कि whether it's a pseudo और it's a virtual और कौन सा है? एकदम धड़ल्ले से दिखाएगा आपको। जब आप अपने लिस्ट में देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा। There are symbols, I am saying, there are symbols for AIS, क्लियरली दिखेगा कि ये pseudo AIS है। मतलब ये वाली डेटा जो ये ड्रेजर है is not transmitted by the dredger, it is transmitted by some authorities. Clear cut identification. तो मतलब अच्छा, तो उससे हम मतलब पता लगा सकते हैं कि सामने एक्चुअल में कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो अगर सूडो होएगा तो फिजिकल ऑब्जेक्ट ही होएगा। एग्जैक्टली। और वर्चुअल एएस मतलब यू मे एक्सपेक्ट के सामने कुछ नहीं भी हो सकता है। अंडरस्टूड। तो उसमें मतलब अगर मैं डेटा पिक करूंगा जब उसका, तो उसमें लिखा होगा कि ये सूडो है ट्रांसमिटेड बाय सम VTS, तो डेटा नॉट सो अप टू डेट, नॉट रिलायबल। लिखा हुआ नहीं आएगा। यू शुड नो दिस बाय सिंबल, लुकिंग एट द सिंबल की सूडो एएस। तो आपको ये क्लास याद आनी चाहिए कि हाँ सर ने बात किया था इसके बारे में क्लास में कि अगर सूडो एआईएस है तो मुझको एक्स्ट्रा कॉशन रखना है कि वो हो सकता है वहां पे हो, थोड़ा सा इधर हो, थोड़ा सा उधर हो, थोड़ा सा उधर हो। सो आई हैव टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट। आपको वो सिंबल देखते ही दिमाग में खटकना चाहिए कि ऐसा सिचुएशन हो सकता है, आई नीड टू बी मोर कॉशियस। सर एएस मैनुअल में सिंबल मिल जाते हैं। हाँ जी अंकित, एएस मैनुअल में सिंबल मिल जाते हैं सर ये वाले। एग्जैक्टली एएस मैनुअल जो है उसमें है। अब सबके अलग अलग होते थे। मैंने अभी बात किया कि सबको स्टैंडर्डाइज करने का प्रोसेस वाज ऑन सम टाइम बैक। दे वर ट्राइंग टू मेक द ऑल द मैन्युफैक्चरर्स यूज सेम काइंड ऑफ सिंबल एंड आल्सो द सिंबल ऑफ एआईएस मैचिंग टू द सिंबल ऑफ आरपा, क्योंकि उसमें भी बहुत तरह के सिंबल्स होते हैं। तो उनको दो तरीके का सिंबल्स ना हो, हम आइडेंटिफाई कर सके एक ही तरीके का सिंबल दोनों में हो। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन चल रही थी आईएमओ की तरफ से, अभी पता नहीं कहां पे पहुंचाएगा। सो क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ अ सूडो एआईएस बाय सिंबल, क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन वर्चुअल एआईएस। आपको देख के समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वर्चुअल एआईएस। हम एआईएस 60 के बारे में जानते हैं। डू वी नो अबाउट एआईएस 60? Heard of it? Last week. Yes, sir. Yes, We had on launch. So if somebody is activating SAT, AIS SAT, आपका AIS receiver will receive that signal, give you an alarm कि SAT signal receive हुआ है. There will be a visual indication and a symbol indicating distress. So now you have to take action. पहले म्यूट कीजिए, फिर एक्शन लीजिए, जो लेना लीजिए. So all situations, different kind of situations are explained or given by certain kind of symbol. Are we good? Yes, sir. So we talked about. Sir, I have one question. Yes, please. Regarding this AIS SAT, since I have not done this on any of my ship, so like for the testing of SAT, other SAT, radar SAT, so we usually see in the open sea if there is no ship 5 to 8 miles, then we can just try that one and we can test that one. Or otherwise, if there is a ship, then we need to transmit the message on VHF to all the ships if we are doing it near the vicinity. So how about AIS SAT? Like, because it will be always picked up by the AIS. Every ship has a AIS. Yes. So how do we test that AIS SAT? So AIS SAT का range will be some 12-15 miles. Low power. Yes, sir. 12-15 miles के भीतर आ जाएगा. So first of all, if you are testing it, you should ensure that there is nobody in the 24 miles area. If at all, you can transmit a safety message that AIS being tested, please do not respond, please do not respond. Whatever safety message, security के हिसाब से आप वो कर सकते हैं. Or maybe you can use
the self-test mode which is provided in that. ओके उसमें होता है सेल्फ टेस्ट मोड सर I'm not too इन sure, मैंने भी नहीं देखा है। मेरे टाइम जब मैंने सेल करना छोड़ा तो उस समय तक आई नहीं थी और जो जहाज थे उस पे था नहीं, तो आई हैव नॉट पर्सनली सीन इट एक्चुअली। होता है सर, ओके सर होता है। आई थिंक वन गाय सेइंग सो आई थिंक होता है, तो आई थिंक दैट इज द वे फॉर टेस्टिंग ऑफ एआई सार्ट। यस भाई जो नॉर्मल सार्ट में होता है ना, नॉर्मल टेस्ट मोड और रन मोड, वैसे इसमें भी होता है। यस नॉर्मल टेस्ट मोड होता है सर उसमें। वेरी गुड। सो हाँ वो नहीं, मैंने नॉर्मल सार्ट में जब टेस्ट मोड होता है तो वी ट्रांसमिट ना, तो उसमें 8 गो अहेड। हाँ, तो वो कॉमन सेंस से मैंने कहा था कि सेल्फ टेस्ट मोड होगा, which I am getting from the horse's mouth itself. You have sailed, you have been sailing, you have seen it, and you all are sharing this information that there is a self test mode which we can use to ascertain the functioning of AI SAT. Good? Yes. Okay. So accordingly, the same device is used for collision avoidance. It can be used for aid to navigation using virtual AIS, pseudo AIS. It can be useful. Virtual AIS normally is used for navigation marks, like we have seen buoys, cardinal buoys, and this and that. Pseudo AIS is used for some floating object which are there, but they are not transmitting. I am transmitting for them. Pseudo AIS. Collision avoidance. AIS can be used for traffic surveillance of the area. The authorities will keep on watching who are the ships passing by. All the ships passing by must be transmitting their AIS data. So as authority, I may be just watching कि कौन क्या है, कहाँ है, और myself I can actively poll a ship to obtain information. I can poll on the AIS device. I can send an interrogation. What kind of cargo you are carrying? The AIS will respond back with the answer, no hazardous cargo. I can ask individual question to this ship, or that ship. So traffic surveillance is another very strong rather usage of the AIS. Traffic surveillance के लिए sometimes the coastal area is a bit longish area. So अभी तक तो हम छोटा छोटा कोस्ट देख रहे थे, बट स्मॉल स्केल में अगर देखें, फॉर एग्जांपल इंडियन कोस्ट इटसेल्फ, तो सदर्न कोस्ट अगर हम कुछ ऐसा देखते हैं, आई नीड टू कीप वॉच ऑन ऑल दिस एरिया. अब एक एयर स्टेशन का रेंज जो होगा 30-40 माइल्स होगा, तो इसके लिए हमें बहुत सारे स्टेशन लगाने पड़ेंगे यहां से वहां पूरे कोस्टल एरिया में. So what is done that we have a base station. The main base station is here, and we install towers, basically what we call repeaters. These are repeaters. If a ship is here transmitting data, it is picked up by the tower here or repeater, and repeater to repeater to repeater to repeater to repeater, finally it reaches the base station. So somewhere in Maharashtra, it is possible that in Kerala coast, if there is a ship, it can be observed using the VHF range of 30 to 40 miles also. How? By means of repeaters. So we can cover large area by means of these repeaters, and these are referred to as wide area network. जैसे बिल्डिंग के भीतर केबल से चलता हुआ लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर की लैंग्वेज में,
वैसे this is wide area network using radio frequency or VDL, what we say sometimes VHF data link. So surveillance is also a tool. So collision avoidance, aid to navigation. We have already seen traffic, traffic surveillance. We also talked about AI SART. In GMDSS, SART was required, which was working on X-band radar, but now it is also allowed that it will work on AIS. So we can have a combination of X-band and AIS SART, where two SARTs are required. One can be X-band, the other can be AIS. When in C area A1, it can be X-band or AIS, anyone. This helps in search and rescue, indicating the distress location of the ship in which is affected. When somebody is activating on our AIS, we will receive this SART information with a distress signal so that we can identify that this is distress. Of course, there will be audio alarm also coming, like DSC receiver. There will be audio alarm also. It can be, AIS can be put on aircraft or SAR aircraft rather. AIS SART or SART AIS receiver can be put on the search and rescue aircraft. They can pick up the signal from long distance and they can head directly towards that. एक AIS SART में और बात है कि it is giving the position directly. एक मॉड्यूल होता है GPS का उसमें. So GPS module say AIS SART will indicate the position very clearly. So you can just start the course and proceed for the rescue if you are in a position to render assistance. So these are various usage of AIS. In aid to navigation, we have already seen virtual AIS, pseudo AIS. It can also be used for nav warnings, etc. Tide conditions, voice conditions, firing exercise going on. तो हमारे पास VHF तो है ही, उस पर ट्रांसमिशन आएगी. EGC रिसीवर है, उस पर आ सकती है. Navtex है, उस पर आ सकती है. We also have AIS on which the safety messages can be transmitted. So these are various ways in which AIS can be used. Types of AIS. There are two types which are in use, class A and class B. What is the main difference between the two? Class A is IMO performance standard compliant. This one is used on IMO vessels or SOLAS vessels. They fulfill all the requirements of IMO performance standard requirements for
AIS, ship-borne AIS. Then the question comes, what is this IMO requirement? IMO requirement is all that we have been studying so far. That it should be working on SOT-DMA, 4 categories of data, transmission schedule, SCH. Transmission schedule, that 6 minutes of static data, 6 minutes voice data, 6 minutes, and course and speed dependent. All that. Modes of operation, the frequencies, there are 2 types of frequencies, the power, that should be high and low. There are other requirements also, that GPS can be internal or external. All these that we have been studying so far are as per IMO performance standards. So class A should be placed on SOLAS vessels only. No, I changed my statement. Class A should be placed on SOLAS vessels only. No, only class A should be placed on SOLAS. Then what is class B? Class B is a smaller, cheaper version. Class B is a cheaper version, and it is recommended for non-SOLAS crafts like fishing boat, dredger, pleasure crafts, all those kind of things which are not necessarily sea going and which are in the coastal area all the time, most of the time, but they are actually danger to navigation one way or the other. If they collide with someone, they also die, and the others also get into trouble. Bigger ships also get into trouble. So class B is recommended for non-SOLAS crafts. Why it is cheaper? Why it is smaller? So there are a lot of deviations from these requirements. For example, SOT-DMA को अगर देखें तो this works on CST-DMA. We will talk about what is CST-DMA. 4 categories of data? No. 1 full message. 1 full message means what? उसी में identification, call sign, अगर call sign तो होगा नहीं, name of the vessel, position, course, speed, etc. Whatever is there, everything in one shot. एक ही तरीके का मैसेज होता है, not 4 categories. Transmission schedule fixed at 30 seconds. It does not reserve the slot for transmission because it is fixed, and that is the deviation of CST-DMA and SOT-DMA. SOT-DMA slot reservation था, CST-DMA में slot reservation नहीं होती. However, in this 3 modes of operation, only 1 mode, not 3 modes of operation. सिर्फ वो एक ही मोड में काम करता रहता है. Frequency same. It is using the same frequency here. Power, which was high-low, no, it is fixed at 2 watt. हम लोग देखेंगे पिक्चर में, अभी यहाँ
थोड़ा खिचड़ी हो रहा है, but we'll take a look in a table form when we see the slide. GPS, which is possible, is internal and external. या तो इंटरनल होगा AIS में, या एक्सटर्नल भी हो सकता है, बाहर से GPS का इनपुट हम दे सकते हैं. Here it is only internal. We don't want complications. टेक्नीशियन बुलाओ, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, इसको ऐड करो, उसको इंटरफेस करो, नहीं. इट शुड बी ए डब्बा, लाया, लगाया, पावर ऑन किया, चलो. There are also differences which I am not explaining here, but we can talk about it in few words. Is that class A is able to transmit, you are able to transmit short safety message, correct? And you are also able to receive it, but not the class B. They can receive, they cannot transmit. They don't have rate of turn indicator, class B, because smaller vessels, where is the rate of turn? So similarly, these kind of differences are there between class A and class B, which we are going to take a look quickly on the slide. Let me just sit down. 5-7 मिनट है, तो उतने देर में हो जाएगा मेरे ख्याल से. Okay. Let me just see first. All right, screen visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So here we are, class A and class B, two types of AIS. All the contracting governments are advised to encourage in their local area, coastal area में जो नॉन सोलास वेसल्स है, उनमें इस तरीके का AIS लगवाने के लिए रेकमेंड करते हैं कि भाई लगवाओ, ताकि किसी को दिक्कत ना हो, उनकी भी जान बचे, हमारी भी जान बचे. तो क्लास A and class B, please go through it. We just discussed. Just go through it. These are the topics that we have done when we are dealing with class A, the modes of operation, types of data transmitted, schedule, SOTDMA, dual frequency operation, power modes, etc. These were the features of class A. Mandated for IMO class vessels or SOLAS vessels. This is the carriage requirement. उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देख लेंगे. वैसे carriage requirement में लगे हाथ हो जाएगा. Which SOLAS vessels are required to carry AIS? Foreign going vessels 300 GRT and above. Coastal vessels 500 GRT and above. Any kind of vessel, coastal or foreign going, irrespective of their size, AIS is a must. All tanker vessels, small or big, foreign going or local, they will have AIS. So AIS class A is mandated for these categories of ship. Foreign going 300 GRT and above, coastal 500 GRT and above, all passenger
and tanker vessels, irrespective of size, irrespective of service where they go. Maybe coastal, maybe international. Class B. Next. The class B is working on the same frequency, working on the same time slots. That means the time slot that we had seen 2250, इसी में ship A, B, C, they were reserving their slots for transmission. ये आगे आगे का रिजर्वेशन करते थे. But class B is not reserving the slot but using one of the slots here itself. वो इसी टाइम के बीच में ट्रांसमिट करता है, क्लास ए के साथ बीच में घुस के कहीं ट्रांसमिट करता है. बट it is seeing, it is watching where it is free. If it is occupied, it will not transmit. Occupied, not transmit. Occupied, not transmit. It will shift its transmission this way or that way to find a vacant slot. थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, ऐसे every 30 seconds it is supposed to transmit. But उस 30 seconds में भी अगर दिखा कि क्लास ए ने बुक कर रखी है यहाँ पे स्लॉट, तो वो आगे पीछे थोड़ा एडजस्ट कर लेता है. इट डज नॉट डिस्टर्ब द ऑपरेशन ऑफ क्लास ए, एंड दैट इज व्हाई क्लास बी इज सेड टू बी पोलाइट टू क्लास ए. प्लीज पहले आप, लखनऊ में वही होता है ना, पहले आप. तो क्लास बी अलाउज द क्लास ए टू डू देयर ऑपरेशन, और फिर जहां जगह मिलता है वहां पे वो ट्रांसमिट करता है. दैट मीन्स इट इज keep checking the carrier frequency. It is sensing the carrier frequency where the open slots are, and so class B is said to be working on CSTDMA. That means no slot reservation, only sensing the carrier. So this is carrier sense time division multiple access. ये 13 नहीं है, बी. So now you know what is CSTDMA and what is SOTDMA. Next, we already said about this. It is fixed at 30 seconds. और क्या क्या डिफरेंसेस हैं? डेटा एंट्री की फीचर नहीं होती इसमें, तो कुछ नहीं डाल सकते. वॉइस रिलेटेड डेटा जैसी चीजें इसमें हम नहीं डाल सकते हैं. एक ही बार एक मैसेज फिक्स्ड होता है. नो 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, नो 4 कैटेगरीज ऑफ डेटा. We'll take just 2-3 minutes more. So these are basic few comparisons. अभी टेबल के फॉर्मेट में देखते हैं कि what are the differences between the two.
Are we good on this? Yes, sir. You can omit this. वैसे इंफॉर्मेशन के लिए नोट कर ले सकते हैं, AIS की जब ट्रांसमिशन होती है तो बैंडविड्थ उसमें 25 किलोहर्ट्ज बनता है, और इट कैन वर्क ऑन 12 kilohertz or 25 kilohertz bandwidth. Class B is only using one bandwidth, which is 25 kilohertz. Next. MKD we said is minimal keypad and display. ये यहाँ पे तो मैंडेटरी है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है एक छोटा सा बॉक्स लगा हो जिसमें कुछ पढ़ने का दिखने का नहीं हो, लगा दिया बस वो काम करता रहता है आपने, नथिंग टू ऑपरेट देयर, ओनली स्विच ऑन स्विच ऑफ फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लाई, चला दिया तो चल पड़ा, छोटा सा डिब्बी जैसा लगा होएगा। ऑफ कोर्स देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी, ऑप्शनल है, यहाँ MKD लगा दीजिए, बटन उटन वाली है तो ठीक है। So are we good on this? Any confusion? No, sir. Very good. So with this, we terminate our, AIS is almost over. एक बार लास्ट अगले क्लास में जब आएंगे तो विल टेक ए लुक कि और कुछ तो छूट नहीं गया है, बट आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट, AIS हो गया तो LRAT करेंगे। ऑलराइट, ओके सर, चलिए बाय बाय, मिलते हैं लंच के बाद मिलते हैं। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।